Okay, let's continue with that number system. So in number system, we were doing that conversion, right? So yeah, good evening to all. Yes. So now we'll convert this number that assume it is 523.12, right? This is what a number given, and this number is in base 8, means this is what a octal number, and I want to convert this octal number into that decimal number, right? I want to convert this octal number into decimal number. In this case, how to convert this one? Yes, firstly you try for this one what should be the result. After that I will tell. Yes, try once. Okay. Okay, it's 3391.1875. Okay. Okay, I think some of candidates they are facing problem. Let me continue. So let's solve this one. So firstly I'll solve this one before this decimal point. And this is what a decimal point given, and let me solve this one. So before this one, what should be the result? As we know that we are converting from base 8 to base 10, and what is the method for that one? So this is what the method. I will take this 3 and I will take 8 power 0.
plus again I will take this 2 and it is 8 power 1 plus I will take this 5 and it is multiply by 8 power 2. Okay, and finally if solve this one, it is 8 power 0 means it is 1 and finally it is 3 plus 8 power 1 means 8 multiply by 2 it is 16 and next it is 64 multiply by 5. Okay, so let me see, it is 64 multiply by 5. So 64 multiply by 5 it is 325. So we can say it is 325 plus 16 plus 3, right? And if add these, so we can say if we add this it is 16 plus 3. So कौन सा अच्छा 6 just a minute 64 multiply by 5, yeah it's 320, right? It is 320 and 6 it is 19 है ना, so we can say it is 9 and it is 3 and 339. Is it correct? Yes. So for this one result is what? It is 339. Right? Now how to solve this one? Base is 8. Right? तो मैंने बताया था इसके corresponding क्या हो जाएगा? It is 8 power minus 1. इसके corresponding क्या हो जाएगा? It is 8 power minus 2. So finally what I can say? After decimal point I will write down for this 1. I can say it is 1 multiplied by 8 power minus 1 plus this 2, it is 8 multiply by 8 power minus 2 multiply by 2, this one. So we can say this is nothing but 1 by 8 plus 1 by 2 by 64 I think. Okay, so if we simplify this one, what will be the result? So you can simplify this one and you can put there. ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? इट इज 339 पॉइंट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा दैट विल बी द रिजल्ट, राइट? एंड इट्स बेस विल बी 10. ठीक है, तो इसका बेस क्या रहेगा? दैट विल बी 10. सो इज इट क्लियर टू ऑल? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. Yeah, good. So let's see the next one. We'll take one more example and after that we'll move for the hexadecimal. Let me take a example. It is 123. Okay, just a minute. Yes, it is 123.10. Okay, this is what base 8 and we want to convert into base 10. Yes, try for this one. Yes, try for this one. Okay, 83.01 from Ruby. Yeah,
It may be right answer. Okay, it is 83.012. Okay. 83.125. Okay. Okay, let's see what should be the result. So before this decimal point, we can solve like firstly I will take this 3 and this should be 3 multiplied by 8 power 0 plus I will take this 2, so it is 2 multiplied by 8 power 1 plus I will take this 1, so it is 1 multiplied by 8 power 2. So 8 power 0 means it is 1 multiplied by 3, it is nothing but 3, plus it is 8 power 1 which is 8 multiplied by 2 which is 16, so I will say it is 16. And next one, it is 8 square. 8 square means it is 64 and multiply by 1, 64. Okay, so 64 plus this one, it is 83, I think, right? So 64 plus 16, so 64 plus 6 is 70 plus 10 80, 80 plus this one 83, so this one is 83. Okay, so result for this one is 83, right? Now I'll check for this one what should be the result for this one. So for this one I can say it is 1 into 8 power minus 1 plus 0 into 8 power minus 2. So 0 वाला तो क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, and for this one I can say it is 1 by 8. So 1 by 8 is nothing but we can say it is 0.124, I think 125 something, no? So 1 divided by 8 we can say it is 0.125. Okay, so what I can say for this one we can say 0.125. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.125. Okay, finally result is what 83.125 in decimals. This is what the final result. So is it clear to all? Okay, clear. What about others? I hope it is clear to all. Okay, fine. Let's see the next one. So next one, we'll convert a hexadecimal number into decimal number, and that will be in points. Okay, so here hexadecimal number is assume 1b 1b.21. ठीक है, this is what a hexadecimal number it is, or let me say 7b.21, and it is in base 16, and I will convert this one into base 10. Okay, so this one is the number given. How to convert this one? You firstly try for this one, after that I will solve. Yeah, number system in digital is very much important in case of that STAT and PGT, because many time they ask the question, or mostly they ask the question from this number system. Okay, Neeraj, are you preparing for STAT also? No,
नीरज एक्चुअली सोचना नहीं है, करना शुरू करते हैं स्टार्ट। अभी मे बी 2 या 3 मंथ में आ जाएगा, ठीक है। बेटर है एक बार तैयारी कर ले, जो मैंने प्लान बताया था उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर ले, क्योंकि उसके बाद पीजीटी के पूरे चांस हो जाएंगे। यस यस। हाँ कोई नहीं, मेरे से एक बार कॉल कर लेना, मैं बाकी का बता दूंगा कहाँ से करना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। यस, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 123.128 12, okay. Okay, let me solve this one. What should be the result? So here base is 16 and we want to convert into base 10, so we know that how to convert this one. So I will take this b and multiply by 16 power 0, plus I will take this 7 and multiply by 16 power 1. Okay, then what should be the result? So this b is nothing but for 10 I can say it is a, and for 11 I can say it is b. Okay, so this b is nothing but 11, so I can say 11 multiplied by 16 power 0 means it is 1, plus this 16 power this one and 7. Okay, so 7 multiplied by 16, 7 multiplied by 16 कितना हो जाएगा? That is a 112. Okay, so this one is 112 plus 11. ठीक है, तो प्लस 11 करेंगे तो क्या आ गया ये? इट इज 3 2 and this one 1. So we can say result for this one is 123. 123. Okay, ये result क्या है? 123. Here there is a decimal point, after that it is 2 and 1. So how to solve this one? Let's see. So we can say it is 2 multiplied by 16 power minus 1 plus 2 multiplied by 16 power minus 2. Okay, it is not 2, it is 1. This one is 1. Okay, 1 multiplied by 16 power minus 2. Let's simplify this one. It is 2 divided by 16 plus it is 1 divided by 16 square. Okay, 1 divided by 16 square. So you can simplify this one and you will get the result. ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे and finally we'll get a result. So it is 123 point result of this one. इसका result जो आएगा that will be the final result and you take the base as 10. Okay, so this is what the finally conversion of this number. Is it clear to all? Okay, clear, fine. So should I take one more example for hexadecimal or should I continue with next one? Okay, let's see the next one. This is what the procedure from hexadecimal to decimal. Okay, so let's see the next example. Next we can say there is a 25.1 to assume.
this is what 25.12, and or 125, and this is what 25 assume. ये क्या है, दिस इज व्हाट डेसिमल नंबर, एंड कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर. ठीक है, इस नंबर को क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. यस, यू ट्राई वंस. That is 125.25 base 10. Convert this one into base 2. 239.144. Okay. या कन्वर्जन किया है हमने किस में, बाइनरी में ना. सो बाइनरी में कैसे पॉसिबल हो सकता है संदीप, दैट 239 समथिंग is it is, yeah, it is not possible case because, yeah, yes, yes, yes. Yeah, Minu, Ruby, yes, that might be the right answer. We'll verify that one. Okay. Yeah. Okay, let me solve this one. So this is what 125. Again, that there can be the two method to solve this one. One can be the this method, you divide this one by 2, 125, and divide by 2, right? One can be the this method. So how to divide this one? If we divide this one, then it is a 62, right? Like a 125 divided by 2. So we can say it is a 6 to the 12, and we'll take 5 here, and it is 2 to the 4, so 4 and 1 remainder. So here it is 62, and remainder 1 is here. ठीक है, next is 2 डिवाइड बाय दिस वन. सो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 331, right? So 62 divided by what, 2. So we can say 3 ja 6, and it is 2, 1 ja, and 0. So remainder is 0. So here remainder is 0, and this is what, 31. Next I can say divide by 2. I can say 15 to the 30, and remainder is 1. Next time if I divide this one by 2, so I can say 7, 7 to the 14, remainder is 1. Next time divide by this one, I can say
2 3 ja 6 and remainder is 1. Next time if I divide, it is 2 2 1 ja 2 1 ja 2 and remainder is 1, and finally I cannot divide, so I can write down this one as, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1, so I can say 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1, after that 0 and 1, 0 and 1 पॉइंट। ओके, तो यहाँ तक का रिजल्ट हमने देख लिया कि 125 को कन्वर्ट किया, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज 5 टाइम 1 3 4 5 0 1, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद 2 5, इसका रिजल्ट निकालना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी। So to simplify this one, what I will do, I will take this 25, right? It is 0.25 now, so I will multiply this one by 2. I will multiply by this base, okay? जिसमें कन्वर्ट करना है ना, उस बेस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। if I multiply this one by this one, so we can say it is 50. so यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट के बाद 0 ही रहेगा ना, यस। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अगेन विल डिवाइड दिस वन बाय, सॉरी मल्टीप्लाई दिस वन बाय 2, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, किसको, जस्ट इस टर्म को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 100। सो वी कैन से इट इज 0 0, ठीक है। सो अब मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 1, और इसको कैसे लिख देना है, इस फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट है, एक सेकेंड, हाँ 25 वाला क्या करना है, 0.25 आ गया ना, 0.25 को मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, बेस से, जिसमें कन्वर्ट करना है ना उस बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बेस क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा ना, और वी कैन से 0.50, है ना। सो ये हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को रिजल्ट में क्या मिल गया, 0 मिल गया। उसके बाद क्या करना है, ये 0.5 आ गया ना, इस 0.5 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 0 0.1, और ये 1 क्या हो गया मेरे पास, नेक्स्ट नंबर आ गया, बाइनरी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अब 0 0 आ चुका है ना, तो इसको फर्दर अपने को क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं कराना है, आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और ये वाला केस होगा, मैंने ये गलत कर दिया था, दैट इज दिस वन 0 1, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज व्हाट 0 1, फाइनली दिस इज व्हाट द रिजल्ट इन दिस 2। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सो कुछ कैंडिडेट्स ने निकाला था, मैथ्स कर भी गया होगा आई थिंक, एक आधे का गलत भी लग रहा था मुझे। रूबी का ठीक था, पूनम का भी ठीक था, मीनू मैम का गलत हो गया था, यस। चलो इट्स ओके फाइन। सो फाइनली आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो दिस इज बट द वे ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर with the decimal point, and sorry, this is what decimal number with the decimal point, and I want to convert into binary number system, okay. So this is what the finally procedure. Should I take one more example or continue? Okay, Sandeep की इच्छा हो रही है one more. Okay, let's see one more example, and after that we will continue. So next I can say it is 72, assume 72 point
32. 72.32. This is but a number, and I will say this is base 10. Yeah, and I will convert this one into binary. Yes, try for this one. Okay, okay. Okay, let me solve this one. So what can be the method? एक मेथड तो ये हो सकता है 72 को क्या करना है, डिवाइड करना है बाय 2, और ये वाला हो गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वी कैन टेक दिस वेट, इट इज 2 पावर 0, फर्स्ट वेट इज 2 पावर 0, और weight I can write down like this one also, like weight is first one, it is 1 2 4 8 16 32 64, assume 128. Okay, so हाँ, मैं जस्ट प्रैक्टिस से के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो बाइनरी के केस में तो, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ बाइनरी यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो। सो 72 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 64, 64 प्लस कितना हो गया, 6 प्लस 2 8, है ना, दैट इज 72। एम आई करेक्ट? 64 प्लस 64 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो गया 70, प्लस 2 मतलब क्या हो गया ये 8, 8 का मतलब आई कैन टेक दिस वन, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज 0। सो दिस इज व्हाट द बाइनरी फॉर दिस 72, ठीक है। तो 72 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 ट्रिपल टाइम 0, एंड आफ्टर दैट पॉइंट